Assalamu alaikum dear students. Today I will start from grade 6 sciences and give you the lesson number 3 based on chapter number 1 science skills. The topic which we are going to discuss is handling data. Along with we'll do some test yourself activities. Handling data, the topic is mentioned on page number 9 and 10 of your book. What are the requirements for this? You need fact file book 1, that is your textbook, pencils, rough notebook and graph paper must be with you. So today's topic is handling data, in which we first discuss data, that what is data. So here comes the definition. Data is basically based on your scientific informations. What is data? Scientific informations is sometimes called data. So this is the definition of your data. Now, very often an experiment gives you lots of data. Data is very useful if you organize and present it in the most appropriate way. So what is the significance or importance of data, which I told you? That it is very useful because you have gained it from your experiments, and after getting all your information from the experiments, a lot of information from experiment, it becomes useful for you not only to organize. What is the meaning of organize? To arrange. That arrange all your information in a proper way and present this presentation to or in front of any other. Now, what are different methods by which you can present or in which you can present your data? So these are some of the methods which are mentioned in your book, starting from tables. You can show your data in the form of table by making some rows and column in this way, and write your all observations which you have made by 5 senses in this column. Then we have next bar charts. Bar charts. Now what are these bar charts? These bar charts are actually plotted on graph papers, in which you have to take first x-axis, that is this horizontal line is indicating x-axis, that is x line, and this vertical line is indicating y-axis. So by mentioning these two horizontal and vertical line, you have to plot, you have to draw your data in the form of bars. These are the bars, rods we can also say. So in this way, when you will present your data, then this method is given the name bar charts. The next method which is basically used is line graphs. Line graphs. In the line graph, basically you again have to take the graph paper. Again you have to draw your values on x-axis and the y-axis in the similar manner. Now after making these lines, you have to plot your significant values over here in the form of curve. What is this? Curve. Sometimes this curve can also be made like this. So
All these values are depending upon your observations, that what you have gained from your experiments. The fourth method of presenting your data is pie charts. This is the most important and most interesting form of data presentation. How? Because you have to make a pie, not for eating. Pie that is not for eating. You have to make a pie that is in a circular form, and then you will represent your values in the form of slices. Some slices are bigger, some slices are too smaller, and some are in between, that is medium. So in this way you will be able to describe all these methods of data presentation. Now students, if we will talk about the data presentation method, then the first method in front of you is in the form of tables. Now you have to observe one of the example of table in your book, and then we will solve all the questions related to this table. Here you can see that table in which the days are mentioned from 1 to 7. Along with it, there are different time, temperature, and the amount of cloud are also mentioned. For example, nighttime temperature at 11 o'clock p.m. are given in front of you from 1 to 7, that is from first day to the last day of the week, starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday. Amount of cloud at 11 o'clock p.m., again night, is also given in the form of formation of cloud, where you can find out that third day there is no cloud, while in the second day there are some clouds seen in the sky. Daytime temperature is given at 11 o'clock a.m. in the morning. Here you can see the temperature in degrees Celsius. And the fourth row is describing amount of cloud once again at the same time, that is 11 o'clock a.m. in the morning, where you can see some amount of clouds on day first and second day, while third day has no amount of cloud, that is not cloudy, while the seventh day of both 11 o'clock night and 11 o'clock morning has some amount of clouds in the sky. Now we are going to solve the questions related to this table. So here comes your first question of today's topic, test your self activity, which is given on page number 9 of your book, and it is question number 2. So by looking at the table on the same page, you can able to give all the answers of these parts A, B and C. Now I am explaining you the questions, and then you can able to write answers first by me, and then you have to write down directly in your books. What is the highest temperature? You have to tell which temperature is the highest. कौन सा temperature सबसे ज़्यादा है? When was the temperature lowest? So the B part is किस वक्त temperature सबसे कम था? Number C, describe the relationship between the amount of clouds and the night time temperature. आपने नाइट टाइम टेम्परेचर और आसमान पर जो बादल हैं उनकी अमाउंट बतानी है कि कितने बादल थे जब आपने नाइट टाइम टेम्परेचर को देखा, और साथ में ये रिलेशनशिप बताना है, ये ताल्लुक़ बताना है कि अमाउंट ऑफ क्लाउड यानी क्लाउड का रात के वक्त के टेम्परेचर से क्या ताल्लुक़ है. So you have to find out the answers of all these and write in your book.
Now students, look at the table carefully and try to find out your answers by yourself. Our first question was, what is the highest temperature? Now look at the whole table in which you have found the numbers in degrees Celsius. So these numbers or these temperatures are 2 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, -1, and so many others. So you have to read it very carefully. 16, 17, 18, then 13, 14. So which number you find that the biggest one, which is the biggest number according to descending order and ascending order, you can follow it. Which is the biggest number of this table? So here you can find 18. 18 degrees Celsius is the biggest number, so this will become the highest temperature of this table, highest temperature of the night time as well as the daytime. Now the next question is, when was the temperature lowest? Temperature कब कम था? So we were able to find the answer in minus, because minus temperature indicates freezing point, and the freezing point normally occurs in the lowest temperature. So here in the first row we can find -1 degree Celsius, but it is normally written in the third day, and they are asking about the question when was. So we will not write the lowest temperature -1 degree Celsius, but they are asking the day on which this temperature was in the atmosphere. So it is day 3rd. Now the next question, that is C part, is describe the relationship between the amount of cloud and the nighttime temperature. So as we can see here, nighttime temperature in front of you and amount of cloud as well. So what is this relationship about? For example, at day 1st, the temperature was 2 degrees Celsius. But with the passage of time, when the temperature is increasing and somehow decreasing, we can say that if one quantity is decreasing, then other will be increased. So, if the nighttime temperature increases, the amount of cloud will also be increased. So, we can say, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है नाइट यानी रात के वक्त, तो उसके लिहाज से अमाउंट ऑफ क्लाउड भी बढ़ेगा. So, this is the relationship of your night time temperature with amount of cloud. After finding all these answers, now we can able to write the answers in the spaces provided over here. So what is the highest temperature? As I told you, the highest temperature is 18 degree Celsius. So this is your answer of the A part. When was the temperature lowest? When. They are talking about when. Okay, so when means on which day. So on which day we have found that the temperature was lowest? It was day 3. Answer is day 3. And what was that temperature? -1 degree Celsius. That is the below the freezing point. Describe the relationship between the amount of cloud and the nighttime temperature. Now we have to write down an answer for this relationship. As we know that as we can say, the higher the nighttime temperature, so write your answer in your book, higher the nighttime temperature, the more amount of cloud will be seen in the sky. The more amount of cloud
will be. So will be in the sky. So these are the answers of your question number 2, test yourself activity taken from the table. Now students, another method of presenting data is in front of you, which is in the form of bar chart. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These are the bar and these are represented in the form of graph, in which we have taken height of students of grade 6 in centimeters from 150 to 164, and the number of students are given on this vertical line, that is the y-axis, from 0 to 5. Now there are some questions related to this bar, and we are now going to solve that problem, that questions. Students, looking at the bar chart which is given in your book, you have to attempt all these bars A, B, C. The first question which is given here, what is the smallest height? सबसे छोटी height किस बच्चे की है, किस student की है? You have to find out the answer from your bar chart. What is the most common height? सबसे आम height किसकी हैं, जो कि क्लास में सब बच्चों की बराबर हैं या इक्वल हैं? How many students have a height of 160 centimeters or more? क्लास में यानी ग्रेड 6 में कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स या इससे ज़्यादा है? Now we will again look at the table and then try to find out the answers of these parts. Now look at the table once again. On x-axis, height of students in centimeters are given. So according to the first part, what is the smallest height? किस बच्चे की height सबसे छोटी है? So try to find out the size of the bar. So which bar you select is the smallest one? Yes. So there are approximate 3 bars at 151, 159 and 164. So we will mention here what is the smallest height? 151. This is the smallest height because no bar chart is mentioned over here. So this is the smallest one because these two values represent at 159 and 164, which are the highest or somewhat the medium height of the students. So our answer is 151 centimeters. Next question is, what is the most common height? सबसे ज़्यादा आम height जो बच्चों की पाई जाती हैं grade 6 में, वो कौन सी हैं? So look at the table again. सबसे ज़्यादा आम, most common, and the most common is 160 because it represents the long bar up to 4. So the 4 students are at the level of 4. The most common height can be found. C part is, how many students have a height of 160 centimeters or more? So this is a difficult one, but we can find the answer. कितने students जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी height 160 और इससे ज़्यादा है? So look at 160 first. On 160, the number of students are 4. 161, there is no student mentioned. At 162, the number of students is 2. So 4 plus 2 is 6. And in the last, 163 is also empty. But in the last bar, 164, the number of students are
or only one. So we can add all these values starting from 160 to 164 and add or sum up. After, you will get your answer, that is 7. So answer that how many students have a height of 160 centimeters or more, then you have to write your answer 7 in your book. Now answers, what is the smallest height? The smallest height is 151 centimeters. What is the most common height? It was 160 centimeters. 160 centimeters. How many students have a height of 160 centimeters or more? The number of students were 7. So the 7 students had shown the height of 160 or more than this. 7 students have shown the height of 160 centimeters or more than this. Therefore, after getting all these informations from tables and bar chart, we can say that putting data in a table is one way of displaying information. डेटा को आप टेबल की शक्ल में जब डिस्प्ले करते हैं या शो करते हैं तो आपका एक ऐसा तरीका सामने आता है जिसमें तमाम वैल्यूज़, तमाम नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं. दिस वेदर चार्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल. आपके सामने जो हमने वेदर चार्ट एक्सप्लेन किया था और अभी आप देख भी रहे हैं, ये आपके सामने टेबल की एक बेस्ट एग्जाम्पल नज़र आ रही है. इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टुगेदर एंड यू कैन compare the results quite easily. By the help of table, आप इंफॉर्मेशन ना सिर्फ एक जगह जमा कर लेते हैं बल्कि साथ साथ एक रिज़ल्ट को या एक अपनी कंक्लूजन को दूसरे कंक्लूजन से कंपेयर करते हैं. उनका जो है वो एक लिंक बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका नाइट टाइम टेम्परेचर था उसको आपने कंपेयर किया डे टाइम टेम्परेचर से. इसी तरह से आपने ये कहा कि नाइट टाइम टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ क्लाउड कितना है, तो नाइट टाइम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता गया क्लाउड की अमाउंट भी बढ़ती गई. इसी तरीके से अगर आप कह सकते हैं कि डे टाइम टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या रहा, तो डे टाइम टेम्परेचर जैसा कि हमें आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए क्लाउड की जो मिकदार होती है, अमाउंट है, वो भी थोड़ी उस लिहाज से कम हो जाती है. तो ये एक कंपैरिजन है जो आपको फ़ौरन टेबल देखते ही पता चल जाता है. However, a table containing lots of information can be confusing and boring to look at. That is why data is also presented in graphs and charts. जहाँ पर हम टेबल के फ़ायदे देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि कुछ नुकसानात भी हैं. और वो नुकसानात क्या हैं कि जब हम एक टेबल को देख रहे होते हैं, इस वक्त आप भी महसूस कर रहे होंगे कि जब टेबल आपके सामने है तो बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, कौन इनको देखता रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन से रो में जाएं, किस कॉलम में जाएं, हम अपना आंसर कहाँ तलाश करें. तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें जब इकट्ठी मिल जाती हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हमें देखने में वो चीज़ अच्छी मालूम नहीं होती. इसीलिए साइंटिस्ट ने आपकी आसानी के लिए कुछ और डेटा रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन मेथड जो हैं वो ईजाद किए, जिनमें ग्राफ्स, चार्ट्स, पाई चार्ट्स वगैरह मौजूद हैं, जिनसे आपकी जो दिलचस्पी है, आपका इंटरेस्ट है, वो बढ़ाया जा सके. Similarly, we have already explained the bar charts. Now the description of this bar chart. A bar chart shows the result of an experiment as a picture. So this is important point कि बार चार्ट क्या करता है. बार चार्ट आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पिक्चर यानी तस्वीर की शक्ल में आपके सामने ले आता है. यू कैन सी एट अ ग्लांस व्हाट द रिजल्ट शो. आपको एकदम एक ही नज़र में, एक झलक में पता चल जाता है कि आपके सामने वो क्या रिजल्ट्स हैं जिनको आपने अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी से हासिल किया.
दिस बार चार्ट शोज द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बार चार्ट आप ही की क्लास ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स की हाइट लेकर किया गया था। इन स्कूल एक्टिविटी हम ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने बाकायदा तौर पे एक प्रैक्टिकल जो है वो वर्क किया जाए, जिसमें हम सारे स्टूडेंट से हाइट जो है वो उनकी लेंगे और हाइट लेने के बाद अपना एक पूरा बार चार्ट दोबारा से ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। Here you can see another method for presenting your data, and this is called line graphs. In line graph you have to take first of all a graph paper which is given here, and again as I told you earlier about the x-axis, that is the horizontal line and the vertical line. Here in this case we have taken time in minutes on the x-axis and the temperature of the tea in degrees Celsius, that is from 0 to 70 degrees Celsius, and the time is mentioned in minutes from 1 to 10. So come to the description. A line graph is useful because it also shows result as a picture. You can also use it to read off values which you have not measured. लाइन ग्राफ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके ज़रिए भी हम रिज़ल्ट को तस्वीर की शक्ल में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे ऐसी वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए जो कि हमें सामने मौजूद नहीं हैं, जिन्हें हम नाप नहीं सकते, बाकायदा तौर पे हम रीड ऑफ करके उन वैल्यूज़ को भी लाइन ग्राफ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एडवांटेज है ओवर द बार चार्ट कि बार चार्ट में हम इस तरह की वैल्यूज़ को मेजर करके बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेजरमेंट के बगैर भी वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। दिस लाइन ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ टी चेंजेस ओवर 10 minutes. So now we are going to solve our questions from ABC part mentioned on page number 10 and question number 1. So look at the line graph carefully. What was the temperature of the tea at the start? Now what is the starting point in the line graph? 0, 1, 2, 3 in the form of time, and 0, 10, 20, 30 degrees Celsius in the form of temperature. Question has been asked about कि कौन सा टेम्परेचर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है जिस पर टी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में था, यानी चाय का आपका जो कप था जिसको आपने गर्म कप लिया है तो उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या था? चेक इट आउट। 0 से हम जाएंगे टेम्परेचर की तरफ और स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर देखा कि ये 60 डिग्री सेल्सियस था, यानी हमने इस रेड लाइन को फॉलो करना है कि स्टार्ट में जब हमने एक गर्म कप लिया या चाय का एक गर्म कप हमारे हाथ में था तो उसका टेम्परेचर कितना था? 60 डिग्री सेल्सियस। सो द आंसर ऑफ द ए पार्ट इज 60 डिग्री सेल्सियस। Then the next question is, how long did it take for the temperature of the tea to fall to 30 degrees Celsius? अब हम जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो ये 30 आपके सामने नज़र आ रहा है। इसी लाइन में कर्व तक पहुँचे, जो आपको ये रेड कर्व नज़र आ रहा है, एक मुड़ी हुई लाइन नज़र आ रही है, इसमें आपने 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को देखते हुए उसी लाइन में मूव करते हुए नीचे आना है। ये देखिए मैं इस तरह से नीचे आ रही हूँ। ये कहाँ पर फॉल हुआ? ये कौन से टाइम पर हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी आपके हॉट कप ऑफ टी जो है वो अब ठंडे होने की तरफ जा रही है। तो कौन से टाइम पर ये हुआ? इट इज़ 2 minutes. So answer of your B part is 2 minutes. You have to write down in your book directly. Now the C part.
What was the temperature of the room where this experiment was carried out? अब आपने बताना है कि इस लाइन ग्राफ के अंदर तो वो टेम्परेचर एक्चुअली मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सा रूम टेम्परेचर है जहां आप देख रहे हैं कि हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें हमने एक हॉट कप ऑफ टी लेने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको 10 मिनट के बाद ऑब्ज़र्व किया तो हमारा टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट होता चला गया। हमारा टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा 60 पे था, फिर 50 पे फॉल हुआ, और फिर हमने देखा कि जब 2 मिनट्स गुजर गए चाय के कप को तो वो थोड़ा सा ठंडा हुआ और 30 पे आके टेम्परेचर फॉल किया। उसके बाद जब हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं कर्व में तो हम देख रहे हैं कि फोर आपके मिनट्स थे उस पर टाइम थोड़ा सा 20 टाइम के अकॉर्डिंग, यानी हमने देखा कि 4 मिनट्स पे जो टेम्परेचर था वो 20 पहुंच गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ये 20 की लाइन है वहाँ पर टेम्परेचर में कहीं भी आपको कमी नज़र नहीं आ रही, यानी अप टू 10 मिनट्स वी आर नॉट फाइंडिंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अब चाय का कप ठंडा होना शुरू हो गया, और ये ठंडा कहाँ हो रहा है, किस टेम्परेचर पे? जिस टेम्परेचर पर चाय का कप का जो एक टेम्परेचर है वो सेम हो गया, 20 हो गया, उसको आपने इस आंसर के तौर पे लिखना है, दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। सो आई एम रिपीटिंग ऑल द आंसर वंस अगेन फॉर दिस लाइन ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 which is given on page number 10. Answer of the first question is 60 degrees Celsius. Write it down quickly. Answer of the second part, that is B part, is 2 minutes because the fall of temperature was observed at 30 degrees Celsius within 2 minutes. And your answer number 3, that is C part, is 20 degrees Celsius, where the hot cup of tea now remain at constant temperature, and which is considered as the room temperature where you are performing and where you have carried out your experiment. Fourth method of presenting your data is pie charts. Here you can see a pie chart. So what is a pie chart? A pie chart is another way of showing information as a picture. So this is the third method used to present your information in the form of picture. Before this, we have already shown you the line graphs and the bar charts. The size of the slices in the pie chart indicate the proportions of numerical data. This pie chart shows the proportion of students liking each season of the year. यहाँ पर अगर पाई चार्ट को आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपको पाई की शक्ल का एक सर्कल नज़र आएगा, जिस तरह से आपने पाए खाए होंगे। ये पाइस क्या होते हैं, जिस तरीके से पुडिंग आप बनाते हैं किसी मोल्ड के अंदर तो वो राउंड शेप में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये एक ईटेबल पर्पस के तौर पे आपने ये एक फिगर ड्रॉ करनी होती है, ताकि आप लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो कि हम मुख्तलिफ़ तरीके से अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपनी इंफॉर्मेशंस को कैसे दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस पाई चार्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है उनको हमने डिवाइड कर दिया है इनटू 4 सीजन्स। फर्स्ट वन इज़ समर, देन कम्स विंटर, स्प्रिंग, एंड लास्ट वन इज़ ऑटम। एंड these all seasons are indicating by different colors. That is, red color is reserved for summer, yellow for winter, green for spring, and blue for autumn. Some percentages are also mentioned here. In summer, the percentage is 50%. In winter 25%, spring 16%, and autumn 9%. Now we are calling these red, yellow, green, blue areas in the form of slices, and we are considering here the size of slices in the pie chart, which normally indicate
or represent our information, that is data, that is the numerical data. अब इस पाई चार्ट के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? इस पाई चार्ट में वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन नज़र आ रहा है जो कि साल के मौसमों को पसंद करते हैं। किस तरीके से कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि समर को पसंद करते हैं। तो उन्होंने एक रफ़ एस्टिमेट आपको बना के दिया है कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गर्मियों के मौसम को पसंद करते हैं। शायद गर्मियों में स्कूल की छुट्टी होती है, इस वजह से है ऐसी बात। विंटर को 25% जो है स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, तो उससे थोड़ी सी यानी समर से थोड़ा सा कम जो है वो लेवल वो विंटर को देते हैं। फिर स्प्रिंग को 16% देते हैं, क्योंकि ग्रीन से इंडिकेट हो रहा है कि हर तरफ ग्रीनरी होती है, बाहर का मौसम होता है। एंड द लास्ट वन इज़ ऑटम। 9% जो है वो स्टूडेंट्स इस मौसम को पसंद करते हैं। शायद लीव फॉल की वजह से आप लोग उदास हो जाते हैं कि पत्ते झड़ रहे होते हैं, हर तरफ जो है वो ग्रीनरी ख़त्म हो रही होती है। So now after observing this pie chart, you can able to solve the answers of your question number 2 on page number 10. So now we are going to solve that.